Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. People in illegally occupied Gilgit-Baltistan protest against corruption in recruitment process of government teachers. J&K administration organizes the first ever conclave on maternal and child health in Srinagar. People of all faiths come together to attend the annual Khirbhavani fair in Ganderbal. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the rich Himachali lifestyle at the Shimla Summer Festival. People of illegally occupied Gilgit-Baltistan are fed up with the rampant corruption taking place in recruitment for various government departments in the region. To raise their voice against the same, the candidates for various posts in the education department held a protest in Skardu to highlight the irregularities in the recruitment process. We have a report. A group of private school teachers recently demonstrated in Skardu against the discrepancies in the recruitment process of the education department in Gilgit-Baltistan. Having been trying to secure a job as a government teacher for long, the demonstrators said the prevalence of corruption and nepotism in the system, as well as a political intervention, is keeping them devoid of their rights. No matter how hard they try, they are rejected in the interviews, citing several pointless reasons. मैंने 2010 में मास्टर करके फारिग होके आया हूँ कराची से और टेस्ट दे रहा हूँ। शुरू से ही प्राइवेट डिपार्टमेंट के साथ अटैच हूँ और गवर्नमेंट टेस्ट भी दे रहा हूँ। क्वालिफाई भी करता हूँ। फिर इंटरव्यू में यही करते हैं कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर रिजेक्ट कर रहे हैं। Corruption, nepotism and bribery have always remained the prime causes of increasing unemployment and underdevelopment in Gilgit-Baltistan. Government institutions have spawned a culture where recruitment is made based on personal acquaintances, sectarian lines, bribery and other illegitimate practices. Credentials are rarely taken into consideration when it comes to hiring or promoting someone. As a result, the government job aspirants in the region have to come out on the roads again and again to demand what belongs to them. In the recent protest held in Skardu, demonstrators said without displaying any merit or waiting list of the selected teachers, a few favored ones were issued the call letters. आज जो है हम यहाँ पे एसटी जो है ठीक है क्वालिफाइड टीचर्स के जो रिजल्ट आए हालिया जो है एजुकेशन में, जिसमें जो है ठीक है बहुत सारे जो है बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। बल्तिस्तान रीजन से जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर 84 नंबर लेने वाले बच्चे जो है वो यहाँ से उसको सेलेक्ट नहीं किए गए हैं और बहुत सारे जो है एतराज़ात है उसमें। ना यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट लगाए गए हैं, ना वेटिंग लिस्ट लगाए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है कॉल लेटर दे के जो है फारिग किया है और अंदर से बाद में आने वाले लोगों को खपाने की जो है कोशिश किए जा रहे हैं। हमारा जो इदारा है महकमा तालीम से हम सब ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि हम प्राइवेट टीचर्स हैं वैसे भी, तो हमें बावसूख ज़राए से पता चला है कि जो वेटिंग लिस्ट का जारी ना किया जाना और उम्मीदवारों को वैकेंट पोजीशंस के होते हुए उन पे तैनात उनकी ना करना, ये सियासी मुदाखलत है इसके अंदर। हमें बावसूख ज़राए से इस बात का पता चला है। तो हम अपने अरबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि कम से कम महकमा तालीम के अंदर सियासी मुदाखलत और जो पॉइंट स्कोरिंग है उससे बाला ताक रख के इस महकमे को आप लोग खुदारा इस महकमे को इज्जत दें। जो कौम इस महकमे को इज्जत देती है वो कौम हमेशा ऊपर गई है, लेकिन जिस कौम ने इस महकमे को, इस पेशे को इज्जत नहीं दी है, हमेशा वो कौम रूबा ज़वाल हुई। No matter how much solidarity Islamabad expresses with the people of its illegally occupied Gilgit-Baltistan, but the reality on the ground will always remain contrary to its claims. Be it exploiting their resources or keeping them bereft of their rights,
Pakistan has left no stone unturned in pushing their lives towards complete darkness. And next we take you to a village in illegally occupied Gilgit-Baltistan where the ignorant attitude of the government has become a prime concern for the locals. They say that the infrastructure in the village is lying in shambles, even creating unhealthy conditions, but the authorities are paying no heed. Several areas in illegally occupied Gilgit-Baltistan have been for long suffering at the hands of inefficient administration. At present, they are in the most deteriorated state. One such area is that of Konodas in Gilgit district. People here are living in distress due to extreme unhealthy conditions, which they believe will soon take a toll on their health. They are urging government to make immediate arrangements for the cleaning of streets. हर 3 दिन बाद यहाँ सिर्फ सुर्खी आती है जो गंदगी उठाती है। हमारी हुकूमत और मुतलका इदारों से अपील है कि वो हमारे बच्चों पर रहम करें, हम पर रहम करें, हमारे यहाँ पे गलियों की सफाई का कोई इंतजाम करें ताकि हम इस बीमारी से बच जाए। हम भी इंसान हैं, इसी जगह पे गायों बकरियाँ नहीं रहती हैं और इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। तो कोनोदास मुस्लिम कॉलोनी के तमाम अवाम गवर्नमेंट और मुतलका इदारों से अपील करते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों पर रहम करते हुए यहाँ पे सफाई का इंतजाम करें। The infrastructure too is in shambles in Konodas. Due to improper drainage and sewage system in the area, people have started catching several diseases. Local also complain about the issue of poor water supply and uncemented roads, to which authorities have turned a blind eye. हमारा गवर्नमेंट को ये माला है कोनादस, इसमें पानी का भी किल्लत है और नाले भी छोटे हैं और गलियां भी छोटे हैं। ये गलियों को भी सिमट करना चाहिए। हमारे ये गुजारिश है कि सब मामले हाल करें। हम सब यहाँ मुसाफिर गरीब लोग रहता है, सब लोग जो है ना मिल के यही मुतालिबा करता है कि यहाँ पानी की किल्लत है और गलियां भी खराब है, सफाई भी नहीं है, कचरे गलियों में ढेर पड़ा है। लोग सब बीमार होते हैं, छोटे बड़े ये नालियों में और ये गलियों में उठता है बैठता है। बेचारों का कोई जगह नहीं है उठने बैठने का, कभी एक तरफ भागता है, कभी दूसरा तरफ भागता है। The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have time and again raised their voice against the stepmotherly treatment meted out on them. They blame the incompetent and impassive rulers of the region who are just concerned about serving their masters in Islamabad rather than doing anything for the betterment of the region. Well, next we move on to Jammu and Kashmir that recently hosted a conclave on maternal and child health. Organized in Srinagar, the event aimed to revolutionize the health sector related to mother and child care and promote their well-being. Have a look. To provide a unique platform to deliberate upon challenges, opportunities and new initiatives in maternal and child health care, two-day conclave was recently organized at Sher-e Kashmir International Conference Centre in Srinagar. Inaugurated by the Lieutenant Governor Manoj Sinha, it was the first ever maternal and child health conclave held in the Union Territory. As a part of the event, Sinha also dedicated pediatric wards, ICUs and maternal ICUs to the public. During his speech, he stated that medical institutions should pave the way for researchers and doctors to produce path-breaking interventions in healthcare. हमारे प्रमुख मेडिकल कॉलेज तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मैं मानता हूं कि रिसर्च उन्मुख बनकर पेटेंट फाइल करने, नए इनोवेशन का रजिस्ट्रेशन कराने पर भी जोर देना चाहिए। आज जरूरत इस बात की भी है कि किस प्रकार विभिन्न भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का समावेश करते हुए अधिक से अधिक सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को
हम मजबूत कर सकें और बड़ी आबादी को उसमें जोड़ सकें। The conclave was attended by a number of delegates, including senior health experts, doctors and medical students. On the occasion, Lieutenant Governor also handed over Lakshya certification to health facilities and released a report on situation analysis of maternal health in J&K. Moreover, videos on maternal and child healthcare services that are being extended in the Union Territory and a feature on sanction of MCH Hospital at Lamberi in Rajouri were also showcased. Though Jammu and Kashmir has come a long way in reducing its maternal mortality ratio and infant mortality rate, it further envisions at decreasing them to establish the region at the forefront of providing quality health care. The Union Territory Administration, through its National Health Mission, has already done excellent work through successful implementation of many programs. And now, through this conclave, it is looking forward to welcome new suggestions. The change has already begun, in a way, at least as far as the IMR is concerned. But as I said, it's not a celebration. It's basically to chalk out the way ahead, so that we achieve, if not zero, but at least single-digit IMR and MMR at par with the OECD countries. And that is the plan, to have this sort of conference, this sort of idea exchange, so that we can brainstorm collectively over these issues and lay the way for the policy ahead. Because schemes, as and when they are, designed, are based on, discussions like these. And further, their implementation is also based on whatever inputs we get from across the country. NHM has gone from strength to strength, as is evident in the last SRS survey results, and we are quite determined in the future also. Our scheme design and implementation will take care of whatever learnings we find in this country. In the recent years, Jammu and Kashmir has taken major strides to boost its healthcare ecosystem. These initiatives include establishment of 2 AIIMS, 7 medical colleges, 2 state cancer institutes, 15 nursing colleges, 150 district and sub-district hospitals, and 2,209 health and wellness centers. Besides, 211 ambulances are providing 24/7 facilities in Jammu and Kashmir divisions, in addition to 286 general ambulances which are serving the people. 64 advanced life support ambulances were also inducted into the fleet to fill all the existing gaps in healthcare in saving precious lives. Moreover, the dialysis facilities, which were limited to few districts, are now available in all 20. Through the conclave, the participants, especially the medical students, also became aware of various developments that have taken place in the medical sector of Union Territory. It's not more than an event, ये एक awareness program है, and ये यहाँ पे आके I felt a lot of developments have occurred in the field of medical, in the field of hospitals, and in each and every district. So overall, I felt like they created more awareness about the maternal health as well as the programs, the developmental programs that the government has initiated over the past years, over the past decades. Also, अगर हम देखें तो being a girl, being a woman, it's my privilege to attend this here to get more knowledge so that I could spread it further to my fellow beings, to my fellow colleagues. The conclave was altogether a great initiative by J&K administration that brought together best of the minds in maternal and child health nationally and globally to discuss the good and replicable practices at primary, secondary and tertiary care level for further improvement in maternal and child health indicators.
Devotees in large numbers thronged the Khirbhavani Temple in Ganderbal district as it hosted the annual festival. One of the biggest religious events of Kashmiri Pandits, the celebration of Khirbhavani fair not just limits itself to one community but is open for all, making it a perfect example of communal harmony. Have a look. Every year, when the Khirbhavani Temple in Tulmulla village of Ganderbal district hosts its annual fair, one gets to see the picture of real Kashmirian. On the occasion, Kashmiri Pandits from the district as well as from other parts of the country visit the temple to pay their obeisance. Muslim community accompanies them in their celebrations. Be it accommodating the Hindu devotees or setting small stalls at the Khirbhavani or doing other arrangements for the successful conduct of the festival, Muslims take part in each and every activity. कश्मीरी पंडितों की और मुसलमानों की का भाईचारा रहा, रवादारी रही, ये एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है और इसी नामुकम्मल को मुकम्मल करने के लिए ये चीज़ें और ये बड़े दिन आ जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कश्मीरी पंडित भाइयों से ज़्यादा यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान सारे आए हुए हैं और ये हिस्टोरिकल मेला है और यहाँ इसको बढ़ावा देना और कश्मीरी पंडित जो भी आए हैं उनका हम खैर मकदम कर रहे हैं। हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से आए हैं। हमारा चेयरमैन पर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रबी साहिबा है, उसने यहाँ स्टॉल लगाया है, पानी वानी का इंतजाम हमने रखा है। लेकिन इससे ये पानी का मसला ही नहीं है, मसला ये है कि हम आपस में भाई भाई है, चाहे कश्मीर, क्योंकि ये कश्मीर अधूरा है इनके बगैर। हम यही चाहते हैं, हम जिस तरह से पहले रहते थे आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। और ये जो आज का मेला है और अल्लाह करे और ये मेला इसकी वसादत से और इंशाल्लाह हम फिर एक हो जाए, हम यही चाहते हैं। Housing the shrine of Ragnya Devi, Khirbhavani Temple is the holiest destination for Kashmiri Pandits. They visit it mostly during the annual festival that starts on the day of Jesht Ashtami. Said to be a manifestation of goddess Adi Shakti, the Devi was first worshipped by the demon king Ravan. It is believed that earlier the goddess used to reside in Sri Lanka and it was her presence that brought prosperity to the kingdom of Ravan. But the abduction of Mata Sita angered her and she asked Hanuman to take her to present-day Kashmir. Every year during the festival at Khirbhavani Temple, devotees offer rose petals and kheer to the sacred spring in the middle of which the temple of Ragnya Devi is constructed. Though it is a festival of Kashmiri Pandits, it has been kept alive for years by the Muslims in the area. हम पूर्वजों की परंपरा को जिंदा रखने यहाँ आए हैं। इस कारण मैं ऑल द वे मैं दिल्ली गया था, फिर वापस आया और आज मेला खीरभवानी में आया हूँ। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, हमारे लिए एक फख्र की बात है कि अपनी वादी में आते हैं, अपने मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई से मिलते हैं और माता से आशीर्वाद लेने आते हैं। ये माँ रागना आई थी श्रीलंका से यहाँ और उससे ये कश्मीर की सबसे रेवर्ड प्लेसेस में है। कश्मीरी पंडित बहुत कम मंदिरों को मानते हैं और जो सबसे पवित्र मंदिर जिसको मानते हैं रेवर्ड प्लेस, वो खीरभवानी का मंदिर है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए हिंदू आज यहाँ कम है लेकिन मुसलमान जो आप देखेंगे जो फ्लावर्स या दीप देते हैं या जो हवन की सामग्री है वो मुसलमान देता है। ये ही कश्मीरियत थी। A replica of the Khirbhavani temple has also been built at Janpur area of Jammu. In case any devotee could not visit the holy site in Ganderbal on the auspicious occasion, he offers his prayers at this replica. हमारा बहुत बड़ा मुतबरक दिन है, सबसे हम पूरा साल इसके लिए वेट करते हैं
और इसमें ये हमारे यहाँ पर तो आपको पता ही है 90 के बाद जब माइग्रेशन हुई तो यहाँ पर भी तो इन्होंने बनाया है, लेकिन असली जो आस्था जो है वो ओरिजिनल के साथ जुड़ी हुई है। हम हर साल जाते हैं वहाँ पर है, लास्ट ईयर भी हम गए थे, तो वहाँ का कुछ जो वहाँ का जो एक प्रतीक जो है वहाँ पर उसका कुछ और ही हिसाब किताब है। वहाँ पर हम जाते हैं तो बड़ी अच्छी श्रद्धापूर्वक जाते हैं, लोग बड़े लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, 1-2 दिन पहले ही चले जाते हैं। Today the Khirbhavani fair has turned out to be the most shining example of brotherhood in the country and a great representation of Kashmirian, which is a centuries-old indigenous tradition of communal harmony in the valley. And next we move on to our section of Incredible India, where today we'll take you to the Queen of Hills, Shimla, that recently welcomed the arrival of summer with its much-awaited annual summer festival. Organised at city's famed Ridge, the fiesta is a wonderful showcase of rich culture and tradition of Himachal. Have a look. Presenting an amazing mixture of culture, heritage, food and glamour, Shimla Summer Festival 2022 was totally a gala affair that brought life to the whole city. Celebrated every year since 1960, the festival, through its handicrafts exhibitions, fashion shows, live music performances, showcased the local culture, spirit and art of Shimla. This year, on the festival's first cultural evening, a team of police band put up a beautiful show. Their performance enthralled the audience, who were seen dancing to their songs on packed Ridge Maidan. पुलिस वालों को परफॉर्म करते हुए देख के इतना मजा आया, और उनको देख के ऐसे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि पुलिस वाले ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर्स हों और उनका हम लाइव कॉन्सर्ट देख रहे हों। बिल्कुल, रियली वेरी नाइस दैट वाज, वी एंजॉयड अ लॉट। I liked it very much. It's some initiative taken by the government for the police. Yeah, I like this very much. Such initiatives must be taken by the government so that it can boost their morale as well. It's something different from their at present working scenario. A fashion show was another highlight of the festival that was organized by the district administration and students of National Institute of Fashion Technology, or NIFT Kangra. Around 20 students modelled at the show and presented the state's traditional attires with a modern touch. They were happy to get such an opportunity that will provide them an exposure as well as promote Himachali culture. हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपने आप को एक्सपोजर लाइक हमें मिल रहा है, एंड ये निफ्ट कांगड़ा के थ्रू हो रहा है, एंड इसमें हम अपने हिमाचली ट्रेडिशन को शोकेस कर रहे हैं। इसमें जो भी दर्शाए गए परिधान हैं, ये सब हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्राफ्ट हैं, उसकी संस्कृति है, उससे प्रेरित है, और हम इस परिधान के थ्रू, इस फैशन शो के थ्रू हिमाचल के जो क्राफ्ट है, हिमाचल का जो नैसर्गिक कला है, उसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसको हम और उठाना चाहते हैं और विश्व स्तरीय पटल पे उसको लेकर आना चाहते हैं। Along with enthralling performances, food was another enticement that drew the attention of visitors to the festival. Mouth-watering dishes in different stalls made up for a delectable experience for the visitors. From savouring local dishes like siddu to tickling their taste buds with street food, people had plethora of options to indulge. आज फर्स्ट टाइम हमने भी लोकल फूड ट्राई किया है, और यहाँ का हिमाचल का लोकल फूड हमने खाया सिड्डू। इसका टेस्ट इतना लजीज, औसम,
नो कंपेयर, किसी से भी नहीं कर सकते। बहुत मजा आया और जो यहाँ का लोकल डांस है, फूड है, स्ट्रीट है, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे समर फेस्टिवल के लिए हमारे कोई स्टॉल मिले हुए हैं जिनसे हमने सिड्डू बनाए हुए हैं, कड़ी है, रोटी मक्के की रोटी है, जिससे टूरिस्टों को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी भी आमदनी बढ़ रही है। The last cultural evening of the festival saw the performances of some of the most famous Himachali and Punjabi singers. Folk artists too registered their presence and mesmerized the spectators with their melodious voices. 2 साल से तो हम लोग कहीं घूम नहीं पा रहे थे, कोविड की वजह से सब पूरा बंद पड़ा हुआ था। बट अभी जो है इस साल लगा कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है। तो गर्मी है लेकिन थोड़ा सा उसके हिल स्टेशन आप आ जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, स्पेशली नोएडा में जैसे है ये 44 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे लेस देन 30 है। तो काफी अच्छा लगा हम लोग को यहाँ हिल स्टेशन आके। और बेस्ट पार्ट क्या था कि यहाँ जो हमारा ये फेस्टिवल भी चल रहा हुआ है, तो मतलब एक सोने में सुहागा मिल गया हमें। यहाँ एंजॉयमेंट प्लस एंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ के एथनिक चीजें हैं, एथनिक डांस है, एथनिक फोक म्यूजिक है, वो सारी चीजें हम लोग को मिली जो शायद वैसे हम ना मिल पाए हमें नोएडा वगैरह में। Altogether, the Shimla Summer Festival is a wonderful conglomeration of different art and cultural performances that not just showcase the state's rich traditions but also promote tourism. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.